Good morning, students. Today I'll discuss about urinary catheterization. Urinary catheter is made up of durable rubber, plastic, and silicone material. It is inserted to the urinary bladder through the urethra to drain the urine. It is a Foley catheter or indwelling catheter which is used to the bedridden patient to drain the urine, and the urine collected to the urinary bag. So catheterization. Let us see that definition of a catheterization. Catheterization of the urinary bladder is the insertion of a hollow tube through the urethra into the bladder to drain the urine. And that catheter procedure will be followed the aseptic technique, aseptic procedure. All the equipments whatever used, that will be sterilized, which are required to during the procedure. Why given urinary catheterization? Why the patient why the patient under the urinary catheterizations? What are the purpose? What are the causes? The patient who have the urinary retention, that patient for relieve the urinary retention, the patient feel discomfort because urine there but not empty. At that time patient feels very discomfort and painful situation. So to relieve urinary retention, catheter is used to drain the urine. If the patient in the disease condition and infection, and patient has severe feel the pain, discomfort, and the burning sensation in the urine, the urine specimen also be collected from bedridden patient through the catheterization procedure. For measuring the residual urine, that will be also done through by the catheterization procedure. After voiding, some urine will be remain in the urinary bladder. So how much amount of the urine will be output urine, and for measuring that urinary catheterization is done. Okay, and bladder always be empty after before the surgery, during the surgery. Okay, and for measuring the accurate urine output, the urinary catheterization is done. Okay, then come to the urinary catheter size. So urinary catheter is measured in the French scale, and each unit is equivalent to 0.33 millimeter in the diameter, and 18 French, that means diameter is about 6 millimeter. If the catheter size, if there is a smaller number, the tube also very smaller. If the French, in the French scale, the unit is very the unit or the number is very smaller. The smaller the tube, catheter. If the large size catheter used for the male, because it is very stiffer, and that causes the helpful for the push the distance of the male urethra. Okay, so urinary catheter is measured in the French scale, and that is the in the simple term the French scale, that is the that is written as FR. Okay, and each unit is equivalent to 0.33 mm in diameter. Okay, and 18 French, that indicate diameter is about 6 mm. If the number is very small, then catheter size is very small, and a large sized catheter used for the male person who are the urinary retention and bedridden patient, because large sized catheter used for the easier push, because in the male patient the urethra urethra is a very distance point from the origin. Urethra, so large size is catheter used for the male because it is very stiffer. Okay, and easier to push the distance of the male urethra. Catheter comes in the very several sizes. Okay,
For the children, 8 French or 10 French are used. For female adult, 14 French or 16 French are used. And for male adult, 20 French and 22 French size of urinary catheter used. तो कही रोचे यूरिनरी कैथेटर साइज कौन यूरिनरी कैथेटर को साधारण फ्रेंच स्केल मपा जाए और प्रत्येक यूनिट 0.33 mm डायमीटर अटंती एवं 18 फ्रेंच इज इक्वल टू 6 mm अटे ओके ताले 0.33 मिलीमीटर डायमीटर अटे 8 फ्रेंच इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर अटे जदि नंबर बहुत स्मॉल थाए ताले कैथेटर साइज बहुत स्मॉल थाए गोटे लार्ज साइज कैथेटर फीमेल मेल मान यूज करा जाय थाए कारण यह बहुत स्टीपर अटे ओके आउ भल डिस्टेंस जिते भी मेल यूथ थाउ तो ताक पुश करने साहाय्य करे कैथेटर बहुत वेरी साइज रही चिल्ड्रेन 8 फ्रेंच 10 फ्रेंच अटे फीमेल 14 फ्रेंच और 16 फ्रेंच अटे और मेल मान 20 फ्रेंच and 22 French size अटे then come to the types of urinary catheter. First is that intermediate catheter, retention or indwelling catheter, then the suprapubic catheter. Intermediate catheter is used to drain the urine from the bladder for a short period of time, that is about 5 to 10 minutes, and it also may be inserted by the patient. Okay. So intermediate catheter is used for the short period of time. After insertion, empty of the urine is emptied from the bladder, collected in the urinary bag. Then nurse should also remove the catheter. Okay, and that catheter is used for 5 to 10 minutes. So intermediate catheter साधारणतः शॉर्ट पीरियड टाइम यूज करा जाए यह 5 ରୁ 10 मिनट पर्यंत रखी बाहर 5 ରୁ 10 मिनट पर्यंत रखिकी कहते यूरिन को यूरिनरी ब्लाडर एम्प्टी करा जाए तापर ताकू यूरिन बैग से यूरिन कलेक्शन करा जाए ताकू डिस्कार्ड करा जाए और साथी साथी नर्स कौन करे यूरिन ब्लाडर यूरिन एम्प्टी होला पर यूरिन कैथेटर को रिमूव करि थाए देन द कम टू द रिटेंशन और इंडोलिंग कैथेटर. In the retention indwelling catheter, it is also be catheter. This type of catheter also inserted to the bladder to remove the urine, and it is used to the long period of time. The patient who are the bedridden, जो patient bedridden अच्छे बहुत long period time मध्य यही indwelling catheter व retention catheter patient को patient यूज करी थाए एथरे यूरिन कलेक्शन करा जाय थाए यूरिनरी बैग मध्य अटैच करा जाय थाए ई कैथेटर रे यूरिन बैग रे यूरिन कलेक्शन होई थाए एवं एथे देख 2 वे ओपनिंग अच्छी तो 1 वे रे कौन हुए ना यूरिनरी कलेक्शन होता है अनदर वे रे कौन हुए ना हमरो किसी डिस्टिल वाटर पुश करा जाय थाए बैलून को इनफ्लेट करिया पई तो केतरा बैलून में रही ओके बैलून पार्ट जोटा रही से पार्ट इनसर्ट करा जाए ओके तो जितले पुश करा जाए तो वाटर पुश कले सेटा बैलूनटा डिफ्लेट थी सेटा इनफ्लेट हो जाए था ओके इनफ्लेट हेले करेक्ट एवं करेक्ट बैलूनटा करेक्ट अच्छी बोली आम जापर था कौन लिकेज न थाए तो एथर दुईटा गोटे 2 ओपनिंग थाए गोटे पटे 1 साइड यूरिन कलेक्शन करा थाए यूरिन फ्लो होता है अब यूरिन बैग रे यूरिन कलेक्शन होकर रुहे और अनदर पार्टे डिस्टिल वाटर सिरिंज द्वारा पुश करा जाय थाए देन कम द सुप्राप्यूबिक कैथेटर दिस टाइप ऑफ कैथेटर आल्सो इंसर्ट टू द ब्लैडर टू drain the urine and collection in the urinary bag or urinary bag pouch. For that reason, a small incision should be done in the pubic area and it is used to the continuous drainage. सुप्राप्यूबिक कैथेटर कौन हुए ना ये कैथेटर ब्लैडर मध्य यूज कर एथरे कौन हुए ना प्यूबिक एरियार ऊपर भाग में किसी छोटिया इनसिजन करा जाए इनसिजन करी कौन कराए ना कैथेटर इनसर्ट करा जाए एवं यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को रिमूव करा जाए एंड इट इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस ड्रेनेज में ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर
यूज करा जाय थाए. See that for the catheterization all the articles are needed, and it is the procedure is done in the sterile under the sterile condition, and trained personnel should be do the procedure because it causes the injury, and patient will be feel the discomfort, and urine can't flow proper way if the procedure not by the trained personnel. So infection is major risk for the catheterization. For that reasons, all the equipment should be sterilized. Sterile equipment also be used, and the catheterization process is done under the sterile condition. So all the equipment are taken, like the catheter 10 cc syringe will be taken. So catheter 10 cubic centimeter syringe will be taken. Sterile water, some distilled sterile water will be taken. Cotton balls with betadine ointment also bring. Lubricant jelly also be bring, and sterile gloves should be taken. Flashlight or lamp for visualization that should be taken, and urine collection bag should be taken, which is attached to the urinary catheter. When urine come from the urinary bladder through the catheter, and it will collected in the urinary bag. And anchoring tape or velcro leg strap that will taken, that will be helpful for the attach of the remaining part of the catheter in the thigh. And disposable bag is used for the collecting the discarded cotton swabs and other elements after during the procedure or after completion of the procedure. So next come to the procedure. First explain the procedure details to the patient. So what type of procedure you have taken, that will be explained details to the side of to the patient on the side of the bedside, because patient in some way becomes anxiety and feel the very irritations because he or she is in hospitalization and feel the fear. For the reasons, details tell about the procedure what have you done at the patient side, and provide privacy by keeping the screen stand and avoid the overcrowding. Okay, and procedure done in such a area where adequate lighting, and give the proper positioning, that is for the male patient, female patient. Give the dorsal recommended positions where a knee will be bent or flexed, and 2 feet will be remain on the floor or on the bed, and cover the upper legs, cover the upper body and each legs. Then only the catheterization area will be visible, and catheter set, place the catheter set between the female patient leg. Okay, तो एतर पोजिशन आम दबा डॉर्सल रेकमेंड पोजिशन दबा फीमेल पेशेंट को, तेरे नी फ्लेक्स बा बेंड रही थो, दुईटाक पाद बेड उपर पैराल रहिबो, एवं अपर बॉडी एवं लेग एरिया को भल भाव कवर करवा, एवं कैथेटर को फीमेल दुईटी लेग मझिरे रखा जाय थाए. ओके, देन कम टू द फॉर फीमेल पेशेंट गिव सुपाइन पोजिशन. ओके, only area around the penis is exposed and other area will be covered, and place the catheter set between the 2 legs of the patient. दुईटा legs मझे हम catheter set को रखा. So then see the inserting the Foley catheter in a male patient. Male patient जो हम Foley catheter insert करवा, तार प्रोसीजर केमती, तार प्रोसीजर सब केमती स्टेप स्टेप रही देखा. एवं you will should maintain the proper aspect through proper maintaining aspect technique during the procedure. Okay,
First, after explain the procedure, then all over the articles are arranged. Then clean the genital or perineal area of the patient with the soap and water. Then it will be rinse and dry. It will be drapped through by the using the water. Then will be also dry that area. Okay. First wash the area, then will be dry by the sterilized cotton cloth or the any linen, dry linen. Okay. Then wash your hand very carefully by the proper hand washing technique. You should wash your hand to maintain the sterility to prevent the cross infection. Then open the sterile catheterization kit. So catheterization kit is there, that in the equipment list the catheter kit is there. So open the sterilized catheterization kit in the proper way to maintain the sterilizations, to maintain the to prevent the infections. Then you already kept sterilized gloves in the kidney tray that you will put on your hand or wear on your hand. Then open the sterile drape and that placed on the patient thigh. And apply sterilized lubricant jelly so again I say that where the in the step number D, that is step number 4, put the wear the sterile gloves. After that open the sterile drape. Whatever the sterile cloths were taken, that will be opened and it will be placed on the patient thigh. And then open the penis in case of male patient. Then apply the sterilized lubricant on catheter tip, and lubricant will be lubricate the catheter tips will be lubricate at least 6 inches from the tip of the catheter. Measure the 6 inches, then by your imagine, and that 6 inches will be lubricated by the lubricate jelly. Okay. And some antiseptic solutions will be poured on the cotton ball, and urine specimen collection if it is required, then it will be kept in the patient site. Okay. Then next step, hold the patient's penis between your thumb and forefinger in the non-dominant hand, and another and retract it, retract the foreskin. Okay. And as glove hand touch to the patient's penis, then now the hand is becomes contaminated. Okay. And bring the artery forceps that hold the cotton swab which is poured with the antiseptic solutions, and that will be swab in the meatus area of the gland penis, and total swab the total area of the gland penis. Okay, in again and again, and through by the one swabbing, the one swab will be discarded, another new sterilized swab will taken, that will be swabbing total the whole the gland penis area. Okay. And continue to inwards to outwards, that will be continuously swabbed again and again, total clean the entire glands, and that will be discarded to the paper bag. Okay. And hold the penis at 90-degree angle,
and advanced catheter should be inserted in the patient's urinary meatus. Okay, because if the pouch and allow the sphincter becomes relaxed, then the catheter will be easily inserted. Okay, and never force to the catheter if the penis is not 90 degree angle, and discontinue the procedure if the catheter will not advance if the patient has unusual discomfort. Okay, so from this point we noted that whatever that point I will set up again, I will tell to you. First, genital बा पेनिट्रल क्लीन करिबा भल भाव में, नेक्स्ट स्टेप भल भाव हाथ धोइबा, तापर कैथेटेशन किट को स्टेरिलाइज कैथेटेशन किट जो नहीं थिबा सेते कैथेटर थाए ता कैथेटर किट को भल भाव में खोलिबा. ओके, तापर स्टेरिलाइज ग्लोव्स जो नहीं थिबा ताको भल भाव में पिंधिबा एवं पेशेंट को थाई एरिया एवं अपर एरिया को भल भाव में फोल्डेड क्लथ द्वारा स्टेरिलाइज फोल्डेड क्लथ द्वारा कवर कर नबा. तापर स्टेरिलाइज लुब्रिकेंट जेली कैथेटर टिप रु 6 इंच पर्यंत भल भाव में लुब्रिकेशन करदेबा, कहीं ये भल भाव में इनसर्ट होता है. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कॉटन बॉल को एंटीसेप्टिक गोटे आर्टेरी फोर्सेप नहीं जावा एवं से फोर्सेप रे कॉटन स्वाब को आनिबा होल्ड करिबा, तापर ताकू कॉटन स्वाब रे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन दे तापर कौन करिबा गोटे यूरिनरी स्पेसिमेन कलेक्शन जो थी ताकू पेशेंट साइड आनिक रखिबा. ओके, तापर पेशेंट पेनिस को थंब आट 4 फिंगर धरिबा, ताकू रिटेंशन करके ग्लैंड पेनिस को जमती एक्सपोज हो ताकू ऑब्जर्वेशन करिबा. एवं जेहेतु ग्लोव्ड हैंड पेशेंट को टच कला ताले बर्तमान हैंड बर्तमान कंटामिनेशन हो गला एवं फोर्सेप कॉटन स्वाब को रखिकी से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऑलरेडी अच्छी. ग्लैंड यूरिनरी मीटस एरिया आउटसाइड को भल भाव में स्वाबिंग करवा, टोटाल ग्लैंड पेनिस को एरिया को क्लीन करवा अंटिल क्लीन है पर्यंत बारंबार गोटे पर गोटे कॉटन स्वाब यूज कर चलवा और ताकू पेपर बैग डिस्कार्ड करनवा. ओके, पेशेंट पेनिस को 90 डिग्री एंगल रे रखिबा. ओके, एवं जेपरिक से पूरा स्ट्रेट हम से ध्यान देवा एवं एडवांस कैथेटर को आम यूरिनरी मीटस को इनसर्ट करवा. ओके, एथरे जतले पॉच एवं आला द स्पिंचर जतले पॉच एंड आला होता है से स्पिंचर रिलैक्स हो जाए. ओके, तापर आम कैथेटर को इनसर्ट करवा. फोर्सफुली कैथेटर को इनसर्ट करवानी जदि ये पॉज आला होना कि स्पिंचर रिलैक्स होना कि पेनिस 90 एंगल ना ताले कैथेटर को इनसर्ट करवा नहीं, कारण यह इंजुरी क्रिएट करें और पेशेंट को अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट फील होता है. ओके, next step what happen when the catheter is inserted to the bladder through by the prostatic sphincter, then urine will start to flow. Gently insert until 1 to 2 inches. The catheter should be inserted in the 1 to 2 inches where urine is notated. Okay, तो कैथेटर कौन करवा ना ब्लाडर भीतर इनसर्ट करवा थ्रू द प्रोस्टेटिक स्पिंचर जो रही है ब्लाडर भीतर को इनसर्ट करवा. देखा जो यूरिन स्टार्ट फ्लो हो देखा पाइबा एंड यूरिन एवं साधारणतः कैथेटर को 1 to 2 इंच पर्यंत आम इनसर्ट करवा जिते कि यूरिनटा नोटेड हो यूरिन के भल भाव देखिपर से समय. तो से ध्यान देवा जो यूरिन देखी हो तेणु 1 to 2 इंच पर्यंत कैथेटर को इनसर्ट करवा. ओके, एवं जार 2 ओपनिंग भितर आउ गोटे ओपनिंग जो रही से कैथेटर तो जो बैलून पार्ट को आम इनसर्ट कले बैलून जो पार्ट अच्छे से पार्ट को आम इनसर्ट कले यूरेथ्रा देकी आम भीतर को इनसर्ट कले तो आनदर जो दुईटा ओपनिंग रही गोटे हूँ यूरिनरी कलेक्शन बैग रोचे आ गोटे हूँ जो डिस्टिल वाटर को पुश करने. तो से जो बैलून रही से बैलूनटा
डिफ्लाट होकर रही थाए तापर डिफ्लाट बेलून को करवा इनफ्लाट करवा केमिति यूजिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टेराइल लिक्विड किसी स्टेराइल लिक्विड सिरिंज नहीं पुश करदे ताहले डिफ्लाट बेलूनटा इनफ्लाट हो जाए ओके जेंटल पुल कैथेटर इनफ्लेमेशन बेलून इज स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ब्लाडर नेक ब्लाडर नेक सहित कौन हम बेलूनटा भल भाव में फिक्स हो रही जाए कनेक्ट कैथेटर टू ड्रेनेज सिस्टम तापर ड्रेनेज सिस्टम को कैथेटर को ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट करदे ओके तो ये जानले आम कैथेटर कौन करवा ना पोस्टाटिक स्पिंचर द्वारा ब्लाडर भीतर इनसर्ट करवा और 1 to 2 इंच पर्यंत आम इनसर्ट करवा कैथेटर जो बैलून पार्ट जो पट रही है पट कैथेटर को हेड पार्ट को आम कौन करवा इनसर्ट करवा तो देखा किसी यूरिन आसला ताले ठीक रे जाइए बोली जाना तो एथेर बेलून जो रही है डिफ्लाट ओके से डिफ्लाट होगी रही थाए जिते आम कौन कले किसी सिरिंज रे किसी डिस्टिल नहीं कि तार जो ओपनिंग रही है ओपनिंग रे आम जो इनसर्ट करूँ तो कैथेटेशन रे कैथेटर को इनसर्ट कलापर आम जो ओपनिंग दुटा रही गोटे ओपनिंग रे किसी वाटर देलापर से डिफ्लाट बेलूनटा इनफ्लाट हो जाए और यूरिनरी ब्लाडर नेक को भल भाव में स्ट्रॉन्गली फिट होकर रही थाए ओके सो कैथेटर शुड बी पास्ड through the prostatic sphincter into the urinary bladder into the 1 or 2 inches where urine will be notated okay and small water will be pushed through the opening then the deflated balloon becomes inflated and we are confirmed that balloon will be totally fit to the ब्लाडर ऑफ द नेक जो ब्लाडर अच्छी से ब्लाडर नेक सहित ए स्ट्रॉन्गली फिट हो जापर देन थ्रू द adhesive tape or the anchoric tape the remaining catheter tube will be fit with the thigh okay and place the drainage bag below the level of the bladder and that will be attached to the catheter tube ताले कैथेटर ट्यूब तल कैथेटर ट्यूब रिमेनिंग पार्ट को करवा थाए आधेसिव टेप जो आंकरिंग टेप द्वारा ताकू भल भाव फिक्स करदे एवं ब्लाडर तल को जो यूरिनरी बैग रही अटैच करदे और से केते अमाउंट यूरिन आसला तार कलर ऑर्डर सब देखी नवा तापर ग्लोव्स दैट विल रिमूव द ग्लोव्स okay and all the equipments should be placed in the equipment should be sent to the for the sterilization purpose all the equipment should be again will be sent for the sterilization purpose and the all linen should be sent to the laundry and gloves should be discarded and document the size of a catheter time and which date and the amount of water in the balloon all should be recorded and reported okay then come to the inserting the Foley catheter in female patient same procedure from A to H in the insert of catheter in case of male patient the same procedure okay जो procedure टा A to H पर्यंत रही मेल पेसेंट से मेल पेसेंट मान से प्रोसीजर सेम रही स्टेप आई रु चेंज हो जाए प्रोसीजरटा चेंज होम देखा सो हियर इन केस ऑफ फीमेल पेसेंट व्हेयर वी इंसर्ट द कैथेटर सम प्रोसीजर्स फॉलो प्रोसीजर फ्रॉम A to H like the male patient is same in female patient from the step I to will be changed okay so place the thumb and the forefinger of the non-dominant hand and spread the labia minora okay and separate to the upwards and here the gloved hand is tossed to the area so that that hand will be contaminated okay the patient now contaminated so you then bring the forceps and that will be hold with the cotton swabs that cotton swab will be sterilized through by the antiseptic solutions so the cotton swabs will be cleaned from upward to the downwards towards the anus so again and again the swabbing procedure will be done clean the area and in every step the cotton swab will be discarded and another cotton swab will be taken
Never swap the area from lower to upwards. Always do the upwards to lowerwards from the cleanest area to the lowest cleanest area. Okay, so keeping the labia separated, clean each side of the meatus in the same downwards manner. So labia major part will be totally labia minor part is totally be cleaned from upwards to downwards the same manner. Okay, and do not come back again to the upwards the previous cleaned area. In one swabbing, the cotton swab discarded, another cotton taken until the clean the cotton swabs used again and again, and deposit the each cotton swab into the paper bag. Okay, and deposit the forceps also in the bag as well. তাহলে এটি କ'ଣ କରିବା ଥମ୍ବ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ ଫିଙ୍ଗରକୁ କ'ଣ କରିବା ନନ୍ ଡୋମିନେଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ଲାବିଆ ମାଇନରକୁ ଥମ୍ବ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ସେପାରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ जो कटन आउ गोटे हैंड रे कौन होगा कटन स्वाब नहीं जावा से ताहा मते एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रे कौन होइतबो से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रे ताको बुड़े की कौन करबा आर्टरी फोर्सेप रे ताको नहीं जावा आर्टरी फोर्सेप रे धरि की कटन स्वाब को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रे बुड़े की बा ताको पियर करी की ताको करबा लाबिया माइनर पार्ट को टोटल क्लीन करबा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ओके, जिते थर अपवर्ड टू डाउनवर्ड करबा गोटे गोटे कटन स्वाब चेंज करबा इन बारंबार क्लीन होला पर्यंत करबा. ओके, जेल जाने क्लीन है तापर करवा नहीं तो 5 to 6 times will be or minimum to 7 to 8 times also be done. then ये कॉटन स्वाब को पेपर बैग रे रखिबा एवं फोर्सेप जो यूज करथबा ताको मध्य गोटे बैग रे रखिबा. द नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू लाबियम also be continue hold the labium and also it will be cleaned. Okay, then insert the lubricated catheter into the urinary meatus. Okay, and angle of catheter should be upwards and advanced catheter should be used to advanced catheter should be inserted. If the catheter will be not advanced, then it will be not to inserted. If the catheter will not advance, you set that patient to inhale and exhale slowly. It causes the relaxation sphincter of the muscle. And you also not force the catheter into the meatus because it causes the injury to the area of the injured the area and patient feels pain and discomfort. ताले कौन करिबा ना लाबियम कंटिन्यूस कौन करिबा होल्ड कर रखिबा एवं अपर पार्ट रे कैथेटर को इंसर्ट करिबा एवं एडवांस कैथेटर को देखिबा जानिबा जे कैथेटर इंसर्ट होई परिबो ताहले आमे कैथेटर को इंसर्ट करिबा जदी हो नाही जदी हबा जानले जे एटा हबो नाही तो पेशेंट को कहबा जे धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास निये निश्वास छाड़े धीरे धीरे करने कहवा ता प्रोसेस निश्वास धीरे धीरे कौन हम ना स्पिंचर मसल खोली जाए एवं तापर कैथेटर इंसर्ट करि थाउ. जेतेबेले देखिबा यूरिन फ्लो स्टार्ट हो गला से ता तले कौन करबा स्पेसिमेन कलेक्शन पई गोटे सैंपल कलेक्शन पई आमे कौन करबा कंटेनर रखिबा एवं सेतरे सैंपल नै जिबा. ओके, देन इनफ्लेट द बालून का इनफ्लेट करवा ना सेटा ब्लाडर नेक सहित करेक्ट फिक्स है कि कैथेटर सबुदिन रहा यूरिन कलेक्शन पर्यंत रहा सेटा कौन करवा बालून को इनफ्लेट करवा. डिफ्लेट बालून थाए ताको स्टेराइल लिक्विड पुणी इंसर्ट करके बालून को इनफ्लेट करा जाए. ओके, देन कनेक्ट द कैथेटर ड्रेनेज ट्यूब सिस्टम एंड यूरिनरी बैग शुड बी अटैच. And drainage then the catheter should be fixed with the thigh through by the tape and place the drainage bag below the bladder and observe the amount, color, order, quantity of the urine. Then remove gloves. Okay, and place the equipment in their places
after that will send the sterilization sterilization purpose, then will be collected that equipment, then will be kept in the proper places. तो जो equipment गुड़ा यूज कराइला ताको sterilization करने ପାଇଁ पठाई दबा, ताको बैग रखी कि फोर्स हो या जहाँ टिकले ताको sterilization purpose ପାଇଁ ऑटो तर सीएसटी डिपार्टमेंट रही ताको हम से पठाई दबा एवं लॉन्ड्री को लिनेन गुड़ा लॉन्ड्री को पठाई दबा एवं अदर आइटम गुड़ाक जहाँ भी अरेंज होकर थुआई जदि से यूज न होता है सेमती से तार प्रॉपर कपबोर्ड रखा जाए है। डॉक्यूमेंट द साइज सॉरी डॉक्यूमेंट द टाइम साइज ऑफ कैथेटर डेट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी कलेक्टेड कलर ऑर्डर सब आम कौन कर रेकर्ड रिपोर्ट करवा। देन कम टू द मेंटेनिंग एंड इंडोलिंग कैथेटर। तो इंडोलिंग कैथेटर को मेंटेन करा जाए इंडोलिंग कैथेटर को आफ्टर एंड बिफोर कैरिंग द पेशेंट वॉश योर हैंड प्रॉपर्ली वेयर द ग्लोव्स प्रॉपर्ली। ओके सो इंडोलिंग कैथेटर को यूज कला समय पेशेंट को केयर दबा पूर्व पर इंडोलिंग कैथेटर जदि पेशेंट केयर पर इंडोलिंग कैथेटर जो बाहर करुचे से बाहर कला सार पर हैंड वाश करवा एवं ता पूर्व जदि आम दबा को जाऊे ता पूर्व हैंड वाश करवा एवं तापर ग्लोव्स पिंधि हैंड वाश करवा जदि पूर्व करे हैंड वाश कर ग्लोव्स पिंधा जदि पर करे हाथ भल भाव हाथ धोवा। ओके पर जदि बाहर करके केयर दौचे बाकी से समय केयर दौचे जदि से समय केयर दौचे इंडोलिंग कैथेटर था समय किसी ग्लोव्स पिंधिक केयर दबा जदि इंडोलिंग कैथेटर बाहर कर सारी ताहले केवल हैंड वाश करवा। सो वाश योर हैंड बिफोर आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट एंड वेयरिंग द ग्लोव्स ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द इंडोलिंग कैथेटर। Twice a day daily you should clean the perineal area with soap and water, and you should instruct the patient don't use the lotion or powder in the perineal area, and if there is a instruction in to follow by the physician's order, arrange the patient to give the shower or tube bath, and teach the patient regarding the how to take their self care during the use of the indwelling catheter. Okay, and it will promote the cleanliness. Change the indwelling catheter if it is necessary. Then come to the removing and indwelling catheter. During the removing of indwelling catheter, how it will be removed, what are the equipments are used. So equipments like the 10 cubic centimeter syringe will be taken, washcloth, towel also taken, gloves also taken, soap or water should be taken. First identify the procedure and explain the details of the procedure, and if you have the burning sensation, then we will do the remove catheter. तमते burning sensation होची ताहले आम remove catheter remove करा होची. For that reasons provide privacy by the skin stand, avoid the overcrowding and give the position the rostral equal position to the female and supine position to the male patient. Then you wash your hand and put the gloves and empty the balloon, because the balloon is inflamed and it will be strongly fitted to the bladder neck. Then if you will pull the water from the then balloon becomes inflamed, balloon becomes deflated, then catheter easily will be removed. Then gently pull the catheter, clean the perineum and penis with the soap and water, and you should properly observe the catheter. Okay, and there is a urine will be urine under the catheter will remain in the urinary bladder, not it will be totally observed. Empty the drainage bag and discard it in the proper way. Remove the gloves, wash your hand and discard the disposable supplies and reusable supplies. तो ये कौन कले तो आमर कौन करवा हाथ धोइबा तापरे इनफ्लेट जो डिफ्लेट बालूनटा इनफ्लेट बालून होगी रही फिट होगी कहीं जिते डिफ्लेट बालून थिला समय कैथेटर डिफ्लेट बालून रही माने सेटा फुलिनी बालूनटा से आम इनसर्ट करदे इनसर्ट कलापर तापर आम कौन वाटर पुश करके जो बालूनटा रही है पुणी डिफ्लेट हो जाए पुणी फुली जाए तापर कौन से ब्लाडर सहित फिट होकर रही है. ओके तो जिते बाहर करवा ताले से ब्लाडर से बालूनटा कौन करवा ना नॉर्मल पोजिशन को आसवा कथा आसब
से तापर आम बाहर कर से कौन करवा ताकू सिरिंज द्वारा जब किसी कंटेंट टाणवा ताहले यूरिन सहित कौन हम सब कंटेंट यूरिन पलि आसो तार बैलूनटा कौन हो ना नॉर्मल पोजिशन आसला डिफ्लेक्ट होगी रहा ओके तापर से धीरे धीरे आम कौन करवा कैथेटर को टाणवा ओके तापर ड्रेनेज बैग रे जो यूरिन अच्छी एम्प्टी करके प्रॉपर वे रे डिस्कार्ड करवा तापर ग्लोव्स को बाहर करदे हैंड को धोई हाथ भल भाव धोवा रेकर्ड एंड रिपोर्ट द कैथेटर इन हाउ मच टाइम द कैथेटर विल बी रिमूव्ड एंड हाउ मच ऑर्डर कलर व्हाट इज ऑर्डर कलर अमाउंट ऑफ द यूरिन दैट विल नोटेड यूरिन कलर अमाउंट सब देखा एंड रिमूव कैथेटर रिमूव कर 20 आवर पर्यंत पेशेंट को ऑब्जर्वेशन कंडीशन रखा ओके तार फ्रिक्वेंसी वार्निंग सेंसेशन हो जाना प्रोवाइड फ्लूइड टू द पेशेंट मेंटेन द इनपुट एंड आउटपुट ओके record the catheter in which time is removed date time and by whom that will be catheter removed is done that will be recorded thank you पता आउ थे कहूँ यूरिन कैथेटर कौन यूरिन कैथेटर को टिप जो थे कि कौन हम ना यूरिन ब्लाडर रिमूव करा जाए था एबाउट 15-20% पर्यंत हॉस्पिटलाइजेशन यही कैथेटर यूज करा जाए था देख फास्ट जोटा रही खाली कैथेटर रही से बैलूनटा डिफ्लेक्ट हो रही तापर भितर को गला तापर कौन हम ना जिते आम वाटर पुश करुचे ताले बैलूनटा से फुली जाता भितर फिट होगी रोच फली कैथेटर कहूँ गोटे रबर ट्यूब that will be used to drain the urine out catheter 3-way channel गोटे कैथेटर 3-way channel रही देख आम देखुले 2-way channel ओके जोटा यूज कर बर्तमान स्ट्रक्चर ऑफ फली कैथेटर देख 2-way जोटा रही एपटे बैलून रही साइज तो ऑलरेडी कही ओके कैथेटर पर्पज भी कही कैथेटर यूजेस कही सारी ओके थैंक यू urinary catheterization process is completed